ગાંધીનગર ખાતે ભારતના ત્રણેય સેનાના આધુનિક હથિયારોના ઉત્પાદનોનું સંરક્ષણ માટે એશિયાનું સૌથી મોટો ડિફેન્સ એક્સપો 2022નું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેના અંતિમ ચરણમાં પોરબંદર ખાતે ગુજરાતના દરિયાઈ સીમાની રક્ષા કરતા સ્વદેશી જહાજ સજગ અને સાર્થકને જોવા લોકો ઉમટી પડ્યા હતા. કોસ્ટગાર્ડ દ્વારા લાઈવ રેસ્ક્યુ ડેમો પણ બતાવવામાં આવ્યો હતો. વ્યાપારની દ્રષ્ટિએ અને સુરક્ષાની દ્રષ્ટિએ પોરબંદરનું જે બંદર છે ખૂબ જ અગત્યનું છે અને એટલા માટે જેને ધ્યાનમાં રાખીને પોરબંદરમાં આપણે કોસ્ટગાર્ડનું હેડક્વાર્ટર આપવામાં આવેલું છે. અહીંયા ખૂબ જ રેગ્યુલરલી કોસ્ટગાર્ડનું જે ડોર્નિયર જે છે એના દ્વારા અને અહીંના જે શિપ્સ છે એના દ્વારા સમુદ્રની અંદર घना प्रकार की एक्टिविटी करवामा आवे छे. डिफेंस एक्सपो हो रहा है मेक इन इंडिया, उसके अंतर्गत हमने 2 जहाज जो मेक इन इंडिया है सजग और सार्थक डिस्प्ले किया है. उसके साथ हमने एक ऑपरेशनल डेमोन्स्ट्रेशन दर्शाया है. उसमें जो कोस्ट गार्ड सी में जो गतिविधियाँ करती है उसके एक छोटी सी रूपरेखा हमने दिखाई है. उसमें हमने सर्च एंड रेस्क्यू दिखाया है, पोल्यूशन कंट्रोल दिखाया है, बोर्डिंग ऑपरेशन दिखाया है. सजग, the state-of-the-art ship, is capable of policing the entire maritime zone of India, and the ship is also designed for anti-piracy, anti-smuggling, pollution control, and carrying out search and rescue operations in the Indian search and rescue region. This ship is fitted with state-of-art communication, propulsion, power generation, and navigational equipments, and this is one of the most sophisticated platforms available with any Coast Guard, not only of Indian Coast Guard, with Coast Guard of other developed countries also. And for the last 1.5 years since commissioning, this ship has faced all the challenges and kept up the maritime security of the country. And assist command in any hostile situation developing on board and nearby during the deployment. For this, we have 4060 as our main armament with the range of 11,000 yards and 12.7 mm stabilized remote control gun capable of automatic tracking, acquisition and firing and other small arms also. इस जहाज की इंजीनियरिंग मशीनरी को 3 भागों में विभाजित किया गया है. पहला मेन इंजन रूम कंपार्टमेंट, दूसरा ऑक्सिलरी मशीनरी कंपार्टमेंट, तीसरा आउटपुट मशीनरी कंपार्टमेंट. हम हमारे जहाज में स्ट्रिक्ट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का पालन करते हैं. इस जहाज में 2 मेन इंजन फिटेड हैं जिसकी प्रत्येक की कैपेसिटी 9100 किलोवाट है. इस जहाज में 4 मेन डीए लगे हुए हैं जो कि इंटीग्रेटेड मशीनरी कंट्रोल सिस्टम के द्वारा कनेक्टेड है. इन केस ऑफ कोई भी एक डीए फेलियर हो जाता है तो अल्टरनेट डीए विद इन 7 सेकेंड ऑटोमेटिकली पूरे सप्लाई को जीवित रखता है. हमारे शिप में जो इमरजेंसी डीए है वो इन केस ऑफ सारे डीए अगर फेलियर हो गए, मान लीजिए चारों डीए चल रहे हैं और फेलियर हो गए तो ऑटोमेटिकली वो भी कनेक्ट हो जाता है विद इन 7 सेकेंड. और हमारे जो मेन इक्विपमेंट है नेविगेशन एंड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट उसको जीवित रखता है. जहाज में अधिकांश इक्विपमेंट भारत में ही बने हैं. जहां हम खड़े हैं यह जहाज का ब्रिज कहलाता है और यहां से हम जहाज के सारे ऑपरेशंस और इवेंट्स को कंट्रोल करते हैं. जहाज में सर्विलेंस के लिए 2 रडार हैं. जहाज में जो स्टीयरिंग एयर सिस्टम है वो भारत में ही बना है. This ship was designed for a speed of 23 knots. However, it has been doing about 25 knots since its commissioning. The 4 DAs which are fitted on this ship are also made and manufactured by Cummins India, while the emergency diesel generator is also of Kirloskar Oil Engine Limited, that is also made in India. Thus, we have many equipments which are already made in India or at least serviced in India, which are fitted on board.